Now these three genes are not expressed. Is this in clear? Now एक और promoter यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा promoter है, ये दूसरा promoter कहाँ से आ गया भाई? If this is a gene और इसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, प्रोटीन बनाना है, तो आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ भी तो बाइंड करना पड़ेगा. आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड ओनली टू द प्रोमोटर सीक्वेंस. तो ये जो प्रोमोटर दिया है, दिस इज द प्रोमोटर ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन. इस येलो वाले रिप्रेसर प्रोटीन का प्रोमोटर सीक्वेंस है. ओके, तो लेट अस सी what happens in case of lacoprons. Lacoprons का पहले तो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. First is the regulatory sequence. Regulatory sequence में है promoter 1, that is the promoter for the repressor protein. Promoter 2, that is the promoter for these structural genes, the three genes which are to be expressed together. And between this promoter and the structural gene is present a operator sequence. ठीक है? Now, what is this lac-opron? This lac-opron is a inducible opron. Oprons दो तरीके के होते हैं. They can be an inducible opron or a repressible opron. ठीक है? What do you mean by an inducible opron? एक ऐसा opron जो हमेशा off रहे, which is always off, and under certain condition it becomes on. I repeat, an opron which is always off and only in under certain condition it becomes on is known as an inducible opron. And a opron which is always on, हमेशा उसकी genes अपने आप को express करती जा रही है, but under certain condition, किसी एक repressor substance के आने पर उन genes का expression बंद हो जाए, तो ऐसे opron को we call it as the repressible opron. तो याद रखना, one very common example of inducible opron is lac-opron, and one example of repressible opron is the tryptophan opron, जो कि हम डिटेल में नहीं करेंगे. Okay, now question arises, next question that may come to your mind is कि ये lac-opron को हम inducible opron कैसे कह सकते हैं? Okay, so our what thing will induce या will start this opron? So let us see कि natural conditions में जिस समय lactose opron है, यानी कि कुछ ना कुछ इसका काम होगा लैक्टोज को डिग्रेड करने का, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने से रिलेटेड इसका काम है. ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस ओप्रोन और उनका इंडिविजुअल फंक्शन क्या क्या है. फर्स्ट इज द LAC-Z gene. LAC-Z gene it is an enzyme. It results in the formation of beta galactosidase enzyme. और ये beta galactosidase enzyme क्या करता है? Cleaves the disaccharide lactose into glucose and galactose. जैसे ही lactose आया, उस lactose को digest करा, उसको glucose और galactose में break down कर देने का काम करता है. ये पहला protein which is being produced by this LAC-Z gene, and the name of the protein is, or the enzyme is beta galactosidase. Second gene क्या करती है? It encodes for beta galactoside permease. ठीक है, ये जीन बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एंजाइम, और ये एंजाइम जैसे ही बनती है ये क्या करती है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट पंप्स लैक्टोज इनटू द सेल. ये सेल वॉल में प्रेजेंट पंप्स को ऑन करती है, जिससे कि मोर एंड मोर lactose keeps coming inside the cell. We know that cell membrane is selectively permeable. So this enzyme goes and stimulates the cell membrane to uptake more and more lactose. ठीक है? Third gene, that is the LAC-A gene, encodes for an enzyme which is known as beta galactoside transacetylase. It is an enzyme that transfers an acetyl group from acetyl coenzyme A to beta galactosides. Okay, acetyl coenzyme A से beta galactosides में एक acetyl group add करने से what will happen? Any this beta galactoside, it will become activated. So activation of this beta galactosides is taking place by the addition of acetyl group. There is one more function which many of these books they say is present in case of this LAC-A gene. So write down the other function of LAC-A gene, because this is not as per many books, this is not the correct function. So the LAC-A gene, okay, some of the books they claim that there is a harmful form of allolactose which is coming into the cell, and this allolactose is degraded by this LAC-A gene. Okay, but again,
some books use the same language, that it is an enzyme that transfers acetyl group from acetyl coenzyme A to beta galactoside so that it can be activated. And some of them, they say that it helps in the degradation of allolactose, that is a harmful form of lactose. Okay, so basically इनका काम क्या है? They all are carrying out a related function. And what is that related function? That related function is lactose को अंदर लेना, lactose को digest करना और किसी भी harmful form of lactose को degrade कर देना या फिर beta galactoside को activate, beta galactosidase enzyme को activate कर देना. Okay, so all the functions are related. That is why जब ये switch on होती है, ये तीनों एक साथ switch on होती हैं. Fine. Now the second thing is कि इन एंजाइम, इन जीन्स के एक्टिवेट होने की, इनके प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हमें कब होगी? व्हेन डू वी रिक्वायर द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज जीन्स? जब लैक्टोज होगा. अगर सराउंडिंग मीडियम में कोई लैक्टोज है ही नहीं, व्हाई डू द सेल नीड्स टू टेक अप लैक्टोज एंड फ्रॉम वेयर विल इट गेट द लैक्टोज टू डिग्रेड इट? ओके, so when in the surrounding medium of the cell lactose is present, only then these genes need to be activated. Otherwise इनके सारे products waste की तरह cell में पड़े रहेंगे and unnecessary energy will be degraded for producing these enzymes. Okay, so what happens constitutively, naturally, what happens? This gene goes on, the repressor gene goes on expressing itself and goes on producing a repressor protein. ये repressor protein जैसे ही बनता है, it binds to the operator. जैसे ही repressor बना, वो operator से bind कर जाता है and when the operator is bind, RNA polymerase, even if it binds to the promoter sequence, it will not be able to move over these structural genes and therefore these three genes will not be expressed. But जैसे ही lactose आया मीडियम में, सेल के अंदर थोड़ा सा भी lactose एंटर किया, this lactose acts as a inducer. कैसे inducer? Inducer for these genes. और वो क्या करता है? lactose आकर के bind कर देता है to this repressor protein. Once the repressor binds to inducer, that is lactose, then what happens? Now it is no longer able to bind to operator. जितनी देर तक ये repressor या जो भी repressor बनता जा रहा है, वो lactose से bind रहेगा, operator will remain free. And as soon as the operator becomes free, यहाँ पे bind किया हुआ polymerase will slide over these structural genes, and after sliding over the structural gene, all these three genes, इनके mRNAs बनेंगे, इनके mRNAs जा करके beta galactosidase, permease and trans-acetylase enzyme बनाएंगे, and these enzymes will further increase the uptake of lactose, breakdown of lactose, and activation of the enzymes responsible for complete breakdown of lactose. Okay, so this happens only in the presence of inducer, and this is how lactoferrin carries out its function. So that is why lactoferrin is known as an inducible operon, which always off but is switched on in the presence of an inducer. An inducer for lactose operon is lactose itself. जब lactose medium में आएगा, तभी ये lactoferrin switch on होगा, तभी bacteria lactose को degrade कर पाएगा. Is this in clear? We will not proceed further. Okay, it's already 11:41, so we will not proceed further, and we'll continue with. We are only left with one topic, that is DNA. Human Genome Project, and we will do the Human Genome Project tomorrow after the test. The test will be in the first period, so in the biology period we'll do the Human Genome Project.